masterpieces of short stories, of novels, of films. I don't need to name them. There are so many. We all are familiar. We have read them. We have seen them, and therefore this genre of literature lives on. Now, I know that we are short on time, so I will not carry on speaking. I will request each of the speakers who have done tremendous work in their areas to kindly enlighten us. If you have an order, Sadhna, then please tell us. We'll leave it to you. Thank you so much. Thank you. Thank you. I first invite Shri Bhupinder Aziz Parihar. श्री भूपिंदर अजीज परिहार एक प्रख्यात उर्दू कवि, अनुवादक और संपादक हैं। उन्होंने उर्दू अलाइव के 12 खंडों का संपादन किया है, जो अंग्रेजी में उर्दू की एक अर्धवार्षिक साहित्यिक पत्रिका है। Recipient of the highest state literary awards, Shiromani Urdu Literature and State Award for Literature in 2015, he was a writer in residence in the UK and Germany, Mauritius, World Hindu Conference. He is a retired professor and head in modern linguistics and literary theory, Government College, Ludhiana. Shri Bhupinder Aziz Parihar. Esteemed Navtej Sarna ji, my fellow speakers, Anis Sahib, Hayal Sahib, distinguished inheritors of the new age, Name Yog Diwalis. This is only an abstract which I present in 10-20 minutes. Partition literature, a humanistic enterprise. Partition literature is a very prominent genre in the history of Indian literature that captures and documents displacements, dislocations, mass migrations, loss and trauma, political and religious violence, riots, interfaith relationships, belonging, humiliation, ethnic anxiety, terror, and chaos. The imperialist policies, brilliantly researched and narrated clinically in Shashi Tharoor's book, An Era of Darkness, British Empire in India, traces the sequence and progression of events that culminated in the division of a nation, its strength, land, and people. Also known as a Holocaust literature, partition literature portrays the human cost of independence and how the motherland was raped and ravaged by the Britishers in various Indian languages. Partition of India, 47. Blood spattered riots touched, inspired, and influenced the creative minds on both sides, compelled them to produce literary and cinematic depiction of the bloodshed and sexual violence, sorrow and confusion. History cannot tell the whole truth. I'm reminded of Aldous Huxley's essay, Tragedy and the Whole Truth. It's fiction, non-fiction,
and poetry that highlight the abysmal complexities of the nightmare. To mention major partition literature writers, Intezar Hussain, Basti and Shahre Afsos, City of Sorrow, Manto, Faiz, Amrita Pritam, Mohinder Singh, Sarna, Inheritors of a New Age, and Savage Harvest. Bhisham Sahni, Tamas, Khushwant Singh, Train to Pakistan, Joginder Pal, Sleepwalkers, Khabra, Chaman Nahal, Azadi, Bapsi Sidhwa, Urvashi Butalia, Yashpal, Jhuta Sach, Krishna Sopti, Kamleshwar और कितने पाकिस्तान मोहन राकेश राजेंद्र सिंह बेदी राही मासूम रजा आधा गांव इसमत चुगताई रामानंद सागर और इंसान मर गया भूपेंद्र नाथ अश्क अजीज अहमद सुरेंद्र प्रकाश सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स Larry Collins and Dominic Laperi, Gulzar, Surjit Pathar, and a host. It's rightly said, history is the biography of a nation and literature autobiography. History gives us facts, not a complete and complex picture of partition, not the whole truth. Partition literature offers nuanced and personal perspectives on the hellish episode which official historical accounts fail to capture. Partition stories mirror the agony of the people affected by the fury and frenzy, offering a deeper understanding of the human impact of partition. In this sense, partition literature challenges the official narratives and brings forth the marginalized voices, as Sir said, and preserves memories for future generations. History gives us facts, whereas literature is a representation of human feeling and emotion. Partition literature is a heritage. The point is how we remember it. Partition did not merely dislocate territories, populations, and emotional anchorings. It also destroyed dreams, leading to disillusionment, reflected in Faz's celebrated poem, Subhe Azadi, 1947. ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले तैयार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गम दिल. People on both sides had to acknowledge the fact that nations are constituted not merely by geographical boundaries or linguistic or religious identity, but also shared by a cultural and historical past. Urtul and Haider
was in Lucknow when riots broke out. She went over to Pakistan. By that time, she had writ Al-Qadariya, which was not appreciated in Pakistan, and she came back. What happens when these are divided? Utopia dwindles into dystopia. Intezar Hussain, the India-born writer who migrated to Pakistan during partition, had hope. Quote, the experience of Hijrat, immigration, would be a source of creativity and growth. But the dream never materialized. What replaced the dream was the loss of collective memory and identity that consequently damaged the very texture of life. Historic amnesia was in itself a deterrent to national growth. I am asked to sum up, but I will take 5 minutes. The partition writings raise several questions. How does a nation define itself, severed from syncretic roots? Where is home? Where do people belong? Do demarcated territories make a nation? Is a nation only a state of mind? Questioning of these issues is a commentary upon the agonizing reality of life, where the individual is drawn toward the future, but is unwilling to sever ties with the past, where disruptions destroy. Dreams are meant for dreaming. Fulfillment remains a distant goal. Faiz concludes his poem Subhe Azadi with these lines: निजाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई. Purpose and message. Partition literature is commemoration of history that explores the social and cultural impact to promote empathy and understanding, harmony, and mutual coexistence. Literature is an improvement on life with underlying message. Understand the past so that we do not repeat it. Partition literature helps us to know our present and future and shape it better. Literature may not make things happen, as W.H. Auden in his famous poem in the memory of W.B. Yeats, but it certainly enough. Ironically, as Ghalib says, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना. Last, does partition literature offer answers? Literary aesthetics has no ideology, no political agenda. Partition literature, by implication, evolves its own gods, as we see in modern British fiction in Virginia Woolf and Joseph Conrad in Specific. It narrates and synthesizes the Holocaust reality, thereby provides a foundation for fresh insights and arguments. Key areas of controversy apart, our current understanding
of the partition is loaded with questions that are hard to summarize, theorize, or answer. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। हमारे आज के अगले वक्ता हैं श्री चंद्रशेखर ताल्या। श्री चंद्रशेखर ताल्या दर्शन शास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, लेखक, कवि, अनुवादक, नाटककार और गीतकार हैं। उनके नाम पर 6 कविता पुस्तकें, 4 गद्य और 2 नाटक हैं। उन्होंने 2002 में तालुक साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनकी कविताएं, कहानियां और लेख 1975 से कई प्रतिष्ठित कन्नड़ पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। श्री चंद्रशेखर ताल्या। Respected chairperson of this interesting literary session, my co-participants, and dear listeners. At the outset, I thank the Sahitya Akademi for providing me this opportunity to participating in the Festival of Letters. I will directly present my paper on the given topic. It may take 20 minutes to finish my paper. Only 10 minutes, I will skip the some lines. Okay. I think maybe you can distribute the full paper later. Thank you. Literature of Partition of India. Summer of 1947 was not like the other summers. Khushwant Singh begins his novel Train to Pakistan with these words: the summer was indeed not like any other summer. Human beings were charred, known and unknown persons were hacked to death, women were raped, children were killed, and that summer was a silent witness to horrible scenes that displayed humans were hotter than man losing all sense of human relations. The burning hatred, jealousy, and fanaticism of humans were hotter than the burning sun of that summer. During the summer of 1947, in the month of August, owing to religious fanaticism, the country called Pakistan cut itself away from its motherland. It was a great tragedy that caused millions of the Hindus, Sikh, and Muslims tore themselves away from their places of birth, from their family and friends, and there ensued an exodus of epic proportions in search of the promised land. Extremities of violence seen appear inevitable to us now in hindsight. It is but natural that a sensitive mind suffers in such a situation. Writers can't help responding to the situation. Innumerable writers have creatively reconstructed the violence in 1947. That many writers have responded with human attitude towards violence. The works that came to mind immediately are Train to Pakistan by Khushwant Singh, Tamas by Bhisham Sahani, Stories of Sadat Hasan Manto, a 2 volumes work edited by Mushrul Hassan, The Midnight's Children by Salman Rushdie, and so many writers. And there are films like Garam Hawa. So these works create a tumult in our hearts. Even now, they have retained their relevance even today, as they remind us of the great tragedy in our history. Freedom at Midnight by Lapire is not a fiction, but a grand narrative based on the details given by eyewitness who somehow escaped death and lived to tell the tale. The Hindu, Muslim, and Sikh people have contributed to
this work. Robert Trumbull of the New York Times exclaims, I have never seen shaken by anything, even by the piled up bodies of the beach head of beachhead of Tarawa, and says the quantity of blood that flows in India exceeds the quantity of rain water. The experience of Ari Atkin, 28 Gurkha regiment is horrible. Shivering, he says that when one sees in reality that one has only heard as an example and try to explain in it in words, even the heart of stone would melt. Lieutenant G.D. Lal would never forget an old Muslim in a column. He was escorting, tugging towards Pakistan, the only possession he had saved from his homestead, a goat. A dozen miles from the frontier of his new home, the old man's goat began to dash towards a stand of sugarcane. The old man followed in frantic pursuit. Suddenly, like a vengeful wraith, a Sikh rose from the sugarcane, beheaded the old man, and ran off with his goat. Another peculiar incident in that of an 18-year-old Muslim girl and a lonely Bhuta Singh, a Sikh aged 45 years. A Sikh was Another Sikh was taking a girl to sell her to another Sikh. As he was passing through the land of Bhuta Singh stops him, offers him a heap of soiled currency and buys that girl. Bhuta Singh, who had decided against marrying, weds her, but their story ends in tragedy. Hindu doctors at Linlithgow Hospital at Kausali mercifully drive out the Muslim patients. The Sikhs going to Pakistan and the Sikhs moving to out of Pakistan refuse to see each other's faces when they meet on the way. I'm skipping some paras even. Novelists too have responded to this exodus and violence. Their works are not works of fiction. Vishnu Sahni, on his preface to Thomas, says, I remembered all this as I begin to write. I have no intention of preaching a lesson to anyone. Writing was an act of emptying myself. He participated in freedom struggle and had seen the violence of partition from close quarters. Thomas is a novel that exceeds, that, that recreates. Can you hear? That. Thomas is a novel that recreates his experience. What I have seen and felt during those fearful days are the basis of my work. Many of the characters of this novel were my colleagues from the Congress party, Sahni says. Not though a ordinary character is enthused by a Muslim mischief monger, kills a pig and throws it in front of masjid. It causes a communal clash. The novel patiently describes how the mischief mongers set Hindus against Muslims and Muslims against Hindus. It is the British who are responsible for this scheming. We are getting enraged by listening to rumors, says Sahan Singh, who is for fraternity of the people, but no one is in a mood to listen to his words. The novel also suggests the part played by rightists and the Sangh Parivar. The situation has not changed a great part of the incidents of the novels take place during the period of partition, but such hatred and violence are repeated even today. Sadat Hassan, Kushwant Singh's train to Pakistan has a different structure.
Train to Pakistan is a compelling novel by Kushwant Singh set during the partition of India, 1947. So I will finish within 5 minutes. Sadat Hasan Manto is another significant writer who has written a metaphorical and appealing stories about partition of India. For instance, we may look at the story that deals with partition of love. A Muslim boy Mukhtar and a Hindu girl Sharada are in love and even have a physical relation. He appears to be good boy, goes to Calcutta to meet his father, and the conversation between him and Sharada goes like this. Mukhtar, how I can marry now I can marry you. Sharada, how can we get married? Mukhtar, why? It is very simple. It is enough if you become Muslim. Sharada, shocked, a Muslim? Sharada sat with her lips sealed as if somebody had stitched them tight. Mukhtar, why don't you speak? Sharada, you become Hindu. You become a Hindu. Mukhtar, how can I become Hindu? Sharada, then how can I become Muslim? Their conversation goes on like this, and finally Sharada forcefully sends him out, saying, now, please go. Our Hinduism is bad, and you Muslims are good. Her tone was filled with hatred. She went to another room and locked herself in. Mukhtar, stuck with Islam in his heart, went out of his house. English title of this story is Two Nations Theory. It doesn't say anything about the partition, but speaking about partition of religion, it creates a metaphor of partition of the country. So thank you. It's a very dirty job interrupting and requesting the speakers to finish within the time limit, but we do have to keep time. We appreciate your efforts. Even we want to listen to the full papers, but we know that we are working within time. So thank you. We'll manage the time. Please carry on. Our next speaker is Shri Prashant Pol. Shri Prashant Pol is a distinguished writer, columnist, and a technocrat. His books include Ve 15 Din, which won the Madhya Pradesh government Sahitya Akademi Award. वे लोकमत और तरुण भारत जैसी प्रमुख पत्रिकाओं में कॉलम्स लिखते हैं. आपने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के साथ कार्य किया है और कई मल्टीनेशनल टेलीकॉम और आईटी कंपनीज के सलाहकार के रूप में भी काम किया है. He has been a member of the Maharashtra IT Task Force as well as the IT Task Force of the Ministry of Road Transport and Shipping. Currently, he is Executive Chairman of Mahakaushal Vishwa Samvad Kendra. Shri Prashant Pol. धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष श्री नवतेज सरना जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन भाई और बहनों, ये जो विभाजन हुआ, इस विभाजन में लगभग 15 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए. इतनी बड़ी त्रासदी इतिहास में बहुत कम मिलती है. दूसरा विश्व युद्ध अगर छोड़ दिया तो इतनी बड़ी त्रासदी देखने को नहीं मिलती है. लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी पे साहित्य कितना सृजन हुआ, साहित्य कितना निर्माण हुआ, बहुत कम. और जो साहित्य निर्माण हुआ, वो साहित्य किस एंगल से लिखा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है. अगर इतिहास ठीक से सामने नहीं आएगा, साहित्य के माध्यम से कथा, कहानी, उपन्यास, कविताएं, नाटक, सिनेमा, इनके माध्यम से इतिहास अगर सत्य रूप में सामने नहीं आएगा, तो आने वाली पीढ़ियों को गलत स्वरूप में सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी. इसलिए जब अभी जिक्र हुआ काफी साहित्य का, जो विभाजन पर लिखी गई है,
ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह जी के बारे में जिक्र हुआ, तमस के बारे में जिक्र हुआ। तमस ये बहुत चर्चित एक प्रकार का उपन्यास और उसके ऊपर की वो सीरियल रही उस समय की। तमस में क्या लिखा है? भीष्म साहनी लिखते हैं, आखिर यह धर्म का मामला नहीं है, आई अंडरलाइन, आखिर यह धर्म का मामला नहीं है, यह शक्ति का मामला है और शक्तिहीन लोग सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। विभाजन धर्म का मामला नहीं था, शक्ति के कारण विभाजन हुआ। पूरा बेस उस तमस उपन्यास का है वह यह है कि यह धर्म का मामला ही नहीं था। यह इतिहास हम लेकर जाएंगे हमारे अगली पीढ़ी तक। क्यों हुआ विभाजन? ये सारे लोग क्यों विस्थापित हुए? मिडनाइट फ्यूरीज नाम से निशित हजारी जी का उपन्यास है। मिडनाइट फ्यूरीज में वो क्या लिखते हैं? आखिर किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष को पूरी तरह से दोष देना संभव नहीं है। किसके संदर्भ में लिख रहे हैं? अगस्त 1946 में अचानक जो कुछ हुआ वह उन समुदायों का डर था। यह संदर्भ है डायरेक्ट एक्शन डे का। 16 अगस्त 1946 शुक्रवार के दिन कलकत्ता में जो नरसंहार हुआ वो अचानक हुआ। इतिहास में अगर आप झांके तो उसके कितने पहले डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में चेतावनी जा रही थी, धमकियां जा रही थी, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है यहां पर। और समुदाय, दोनों समुदायों का डर था। दुर्भाग्य से इन सभी इस प्रकार के उपन्यास और साहित्य का हमने ग्लोरिफिकेशन किया है। इतने वर्षों तक इनका ग्लोरिफिकेशन चलता रहा, सत्य सामने आया ही नहीं। विभाजन में किसकी भूमिका थी, विभाजन क्यों हुआ, स्ट्रेटेजिक क्या क्या गलतियां थी, वो सामने नहीं आया। वो सामने आना बहुत आवश्यक है, अलग अलग माध्यमों से सामने आना चाहिए। बंगाल ने बहुत कुछ भोगा है। आज जिसे हम पूर्व बंगाल कहते हैं और आज जिसे हम पश्चिम पंजाब कहते हैं, दोनों ने बहुत भोगा है। बंगाल में एक बारिशाल नाम का जिला है। मैं जब मेरी पुस्तक वे 15 दिन पर काम कर रहा था तो मैं बारिशाल के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था। बारिशाल को उन दिनों ये ईस्टर्न का वेनिस कहते थे। अत्यंत समृद्ध, अत्यंत सुंदर, बहुत अच्छा जिला था, ऐसा नगर था। कीर्तन खोला नदी के किनारे बसा हुआ, पूर्ण हिंदू संस्कृति में बसा पड़ा, 60 से 70% हिंदू जनसंख्या अच्छे से रह रही थी। क्या दोष था उनका? कितना नाट्य है इसमें, कितना ड्रामा है, सामने नहीं आया इतिहास में। किसी इसमें नहीं आया। पश्चिम पंजाब के कितने ऐसे गांव जो सिख और हिंदू से बहुल थे, उनको भगाया गया। वो पुरखों से वहां पे रह रहे थे, अनेक आक्रांताओं का आक्रमण सहन करके वहां पे डटे थे, भगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा जो हमारे पास था, एक प्रकार से कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां पर आ गई थी और वो भारत में शामिल होना चाहता था। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, वहां पर रेफरेंडम होगा। तो किसी इतिहास के किसी इसमें साहित्य में नहीं आया। ब्लंडर मिस्टेक थी वो अगर हमारे पास आता, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं, तो आज भारत का भूगोल और इतिहास अलग होता। बात ही नहीं सामने आई। ये पूरे सारे विभाजन का चित्र अगर हम देखें तो चाहे यशपाल का झूठा सच है या कमलेश्वर जी का कितने पाकिस्तान है या मोल्टेड सन शहादत हसन मंटो जी का है, अभी उर्वशी बटालिया जी के बारे में अदर साइड ऑफ साइलेंस की जिक्र हुआ था। सारी पुस्तकें अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें एक ऐसी जानकारी है जो एक ही एंगल से हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नहीं, ये तो भाईचारा ही वाला मामला था, इसमें कोई धर्म का सवाल नहीं था। इसमें इतना ज्यादा नाट्य छुपा है, इसमें इतने ऐसी स्थान है जहां पे कथा, उपन्यास, कविताएं, मूवीज बन सकती है। दूसरे विश्व युद्ध में कितना साहित्य का सृजन हुआ, जबरदस्त।
और अगर दूसरे विश्व युद्ध के साहित्य के सृजन के बारे में अगर हम कहे, सोचे, तो उसकी तुलना में हमारे विभाजन पे कितना साहित्य का सृजन हुआ? बहुत कम। और इसलिए लोग डरते थे शायद शुरुआत में, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम के बारे में लिखेंगे तो हमें तो भाईचारा चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। इसके कारण सत्य सामने नहीं आया। ये पूरे सारे विभाजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी भूमिका थी। अनेक स्थानों पर शरणार्थी शिविर लगे, इसका इतिहास में प्रमाण है। ये सारा नाट्य है, ये सारा, इसमें सब कुछ है, कोई जिक्र भी नहीं करता। नेशनल मुस्लिम गार्ड नाम का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लीग का था। किसी साहित्य में पढ़ाया आपने? हम भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद कि मुस्लिम नेशनल गार्ड नाम का कोई साहित्य, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी था। जब वे 15 दिन नाम की पुस्तक में लिख रहा था, विभाजन के पहले के 15 दिन, और मैं आप सबका बड़ा आभारी हूं कि उस पुस्तक को बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिली है। 9 भाषाओं में वो अनुवादित हुई है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का उसको पुरस्कार मिला है। पोर्ट्रेट शैली में मैंने लिखी है, जो हुआ वो तथ्य सामने रखना, कोई अपने विचार नहीं रखना, और तथ्य से सामने। वे 15 दिन, इंग्लिश में 15 डेज, पंजाबी में भी हुई है, तेलुगु में हुई है, तमिल में हुई है, असमिया में हुई है, अनेक भाषाओं में हुई है। ये सारी बातें सत्यता के साथ सामने आनी चाहिए, और सामने साहित्य की अलग अलग विधाओं में आनी चाहिए। तो कहीं हम कह सकेंगे कि हमने हमारी आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को सत्य रूप में इतिहास एक प्रकार से दिया है। इसलिए अब इस प्रकार के साहित्य के सृजन की आवश्यकता है, जो सच को, विभाजन के सच को, विभाजन की विभीषिका को हमारे सामने रखे। धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। मैं आज के अंतिम वक्ता श्री रवि तेकचंदानी जी को आमंत्रित करती हूँ। श्री रवि प्रकाश तेकचंदानी एक प्रख्यात हिंदी और सिंधी लेखक, विद्वान और सिंधी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद और केंद्रीय हिंदी निदेशालय MHRD के पूर्व निदेशक तेकचंदानी जी वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य अध्ययन विभाग में सिंधी के प्रोफेसर हैं। He has 27 books, including originals, translations, transliterations, and edited works to his credit. Shri Ravi Tekchandani. साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण विषय पर आज की संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित इस इजलास के, इस सत्र के सदर साहब, अध्यक्ष महोदय और उपस्थित मेरे सहयोगी वक्तागण, इस सभागार में उपस्थित आप सभी शब्द साधकों को प्रणाम करता हूं। इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ सिंध के संदर्भ में रेखांकित करते हुए आपके सम्मुख कुछ टिप्पणियां, कुछ बिंदु आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यदि इस सत्र के प्रारंभ की टिप्पणी नवतेज सरना जी द्वारा हम ध्यान से देखें तो उन्होंने इस सत्र की भूमिका में बहुत अद्भुत तरीके से उन्होंने बातें रखी। उन्होंने उसमें कोई ऐसा विषय नहीं था जो विभाजन के संदर्भ में नहीं छुआ हो। तो अध्यक्ष जी, आपने जो एक टोन सेट किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आपने एक बहुत अच्छी तरीके से हम सबको एक मार्गदर्शन दिया। सभी विद्वानों ने अपने अपने मन की बात हम सबके सामने साझा की, और अभी जस्ट मुझसे पूर्व हमारे वक्ता महोदय, इन्होंने इतिहास के कुछ पन्ने को खोल दिया। मैं सरना साहब के और इस इतिहास के पन्ने के बीच की एक दो बातें कहूंगा, फिर सिंधी पर आता हूं मैं। ये सत्य है कि विभाजन की जो विभीषिका या विभाजन की जो त्रासदी है वो इतिहास के पन्नों में अलग रीति से दर्ज है, और साहित्य के पन्नों में उतनी दृष्टि उसमें प्रदर्शित नहीं होती है। ये सब हम जानते हैं, मानते हैं। इसीलिए वक्ता महोदय ने वो दृष्टि भी दिया, वो दिशा भी दिया।
जब साहित्य सृजन होता है तो हम सामान्यतः कहते हैं ना, ये समाज का दर्पण है, और ये बहुत एस्टैब्लिश्ड सूक्त है। जब ये हम कहते हैं समाज का दर्पण है, तो समाज ने जो ठीक तरीके से भोगा उसको साहित्य में प्रदर्शित आज तक नहीं किया गया। ये पीड़ा हमारे अभी अभी वक्ता ने आपके सामने रखी है। विभाजन को इतिहास से देखना होगा, विभाजन को भूगोल की दृष्टि से देखना होगा। वो किस प्रकार, मैं आपको अभी अपने ही समय में जो अलॉटेड टाइम है उसमें बताना चाहूंगा। और सिर्फ भाषा, साहित्य, संस्कृति, समाज और हमारा जो नित्य प्रति का जीवन है उस दृष्टि से नहीं देखना होगा। उस भूमि के अलावा जो भारत की आजादी के आंदोलन के लिए लड़ रहा था, आजादी प्राप्त कर रहा था, एक तरफ आजाद हो जाता है, दूसरी तरफ विभक्त होता है, तो जो ऐसा क्षेत्र भारत का जिसने आजादी के लिए लड़ा, उसके साहित्य के मन में, उसके पृष्ठों में विभाजन वहां पर उद्धृत क्यों नहीं हो सका? जब साहित्य के सृजन की बात आती है और विविध विधाओं में, विविध एकांशों में जब उसकी बात करती हैं, उसमें इज्म्स आते हैं, बहुत सारे उसमें सूत्र समाहित होते हैं, तो हमारे अपने विभाजन के इस दर्द को भारत की सभी भाषाओं में उतना रेखांकित क्यों नहीं किया जा सका? इस प्रश्न का उत्तर हमें खोजना चाहिए। यदि दक्षिण भारत की, पूर्वोत्तर भारत की, अन्य प्रकार की घटनाओं का समावेश अन्य भारत के क्षेत्र में घट रहे साहित्य, रचे गए साहित्य में हो सकता है, तो विभाजन की इस त्रासदी के साहित्य का सृजन कुछ बिंदुओं में भी वहां पर आना चाहिए। मैं आदरणीय सरना जी से कहूंगा, यदि उस पर कुछ बोल सकेंगे तो हमारा मार्गदर्शन होगा। आजादी के आंदोलन में सिंध को जरा एक अलग दृष्टि से आइए देख लेते हैं। सिंध का बिल्कुल ठीक कहा गया कि कुछ एक 5 सप्ताह पूर्व एक सज्जन, कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं, बिना विमर्श के अब्रप्टली एक लकीर खींच देते हैं, देश बट जाता है। और जब देश बटता है तो बटने का जो दर्द भोगा गया उस समाज के द्वारा, क्या हम खान अब्दुल गफ्फार खान को भूल सकते हैं क्या? क्या उन्होंने देश की आजादी के लिए नहीं लड़ा क्या? सिंध जो बॉर्डर पर होता है, सांगर डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर होता है, उसका एक अंश भी समाहित नहीं किया जा सका। सिंध के लोग जब लड़ते हैं तो क्या वो जानते हैं कि देश बटेगा, उसके बावजूद हम लड़ेंगे? क्या सिंध के लोगों को ये पूछ लिया जाता है कि नहीं, आप लड़ोगे लेकिन आप बटोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा? इस प्रकार के विषय क्या साहित्य में आ सके क्या? लेकिन उसके पश्चात सिंधी में विभाजन के भाव को लेकर के अद्भुत रचनाएं उपलब्ध है। उसका अनुवाद कम हुआ है। इस सभागार में जब मैं आ रहा था, और इस सभागार से पूर्व साहित्य अकादमी द्वारा ही आयोजित एक युवा लेखक के नाते एक ट्रैवल ग्रांट के रूप में जब मैं विभिन्न क्षेत्रों में गया था, तो 2 प्रश्न लेकर के जाता था बंधुओं कि आप सिंधी समाज को कितना जानते हैं, और सिंधी समाज के द्वारा विभाजन को जो भोगा गया है वो कितना जानते हैं। तो उनका उत्तर बड़ा सुमधुर होता था। वो कहते थे, नहीं, हम सिंधी समाज को बहुत नहीं जानते, लेकिन एक कराची मिष्ठान भंडार है वो जरूर जानते हैं। अगर आप कराची मिष्ठान भंडार जानते हैं तो हमारे द्वारा भोगी गई उस पीड़ा को जो हमने लिखा है, उसको अनुवाद के माध्यम से या अन्य माध्यम से जानने की महती आवश्यकता है। एक अजो उपन्यास है, साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत है। उसका जो प्रोटोगनिस्ट है वो मोहन, जब वो माइग्रेट करके आता है, अजो का अर्थ होता है सामान्य अर्थ में घर, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन उसका अर्थ होता है आश्रय, शरण। लेकिन मैं आप लोगों के सम्मुख अपने एक छोटे से अनुभव से एक प्रश्न भी खड़ा करता हूं कि आज का क्या यह नैरेटिव सेट करना, आज इसको पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है क्या कि जो उस पश्चिम क्षेत्र से या पूर्वी क्षेत्र से प्रव्रजन करके डिस्प्लेस्ड होकर के यहां आए, वो शरणार्थी कब हो गए बंधुओं? आप सब साहित्यकार लोग हैं, जरा सोच के देखिए कि इस शब्द को हमने क्यों बार बार रेखांकित किया, क्यों उद्धृत किया, क्यों लिखा गया? शरणार्थी की परिभाषा में ये लोग आ पाते हैं क्या? हम डिस्प्लेस्ड लोग हैं, हम विस्थापित लोग हैं, हम शरण नहीं लिए हैं। हम एक ही देश में थे, एक ही देश से एक अंग में आ गए, विभाजित हो गए, दाना दाना हो गए,
तो क्या हम शरणार्थी हो गए क्या? यदि यह लगातार लिखा जा रहा है तो आज का समय है, इसको सोचने की जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब लाल किले की प्राचीर से इस भाव को उठाते हैं तो उस भाव के पीछे उनका भाव मन क्या होता है कि उस दर्द को, उस पीड़ा को भी, देश की आजादी को याद करते हो, लेकिन उस पीड़ा को भी याद करो, समझो, उसको रेखांकित करो। जो छूट गया है उसे समाज के सामने रखो, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि आप समाज को चोट पहुंचाओ। नहीं नहीं, आप सब लोग मिल करके आइए, एक साथ हो जाते हैं। देश 47 में आजाद होता है और बंटता है, और 50 वर्ष के बाद एक युवा जिसका जन्म यहां पर खंडित भारत में होता है, उसकी कुछ पंक्तियां सिंधी कविता देख लीजिए। मैं पहले वाली बात में सुना देता हूं। करते हो याद जश्न आजादी को तुम साल दर साल, 47 की काली रात भी याद करके तो देखो, और चीख, खून, बलात्कार, बिछो खुद ब खुद दिख जाएगा, किसी विस्थापित की आंख में झांक करके तो देखो। कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़ आए, कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़ आए, अपने मोहल्ले को जरा छोड़ करके तो देखो, और बिछो के दर्द का एहसास अभी हो जाएगा, अपनी मां से 2 पल जुदा हो करके तो देखो। और उठाते हो बेजा सवाल, राष्ट्रगान से सिंध निकाल दो। कुछ लोगों ने उठाया था। उठाते हो बेजा सवाल, राष्ट्रगान से सिंध निकाल दो, नहीं मिलेगा सिंधियों सा बलिदान, खोज करके तो देखो, और सिंधियों के देशभक्ति का अनुभव हो जाएगा, किसी सिंधन के गर्भ से जन्म लेकर के तो देखो। अब ये भाव कौन प्रस्तुत कर रहा है, कौन प्रदर्शित कर रहा है? जिसने पाकिस्तान में जन्म नहीं लिया, जिसने उस अखंड भारत में जन्म नहीं लिया, लेकिन उसने अपनी मां, अपने पिता, अपनी बड़ी बहन की आंखों में झांक झांक करके रात को सोने से पहले सुनते सुनते वो बड़ा होता है और वो रचता है। तो नवतेज सरना जी ने जो कहा कि जो विषय सारे अभी तक रेखांकित नहीं किए गए हैं, ये उनका दायित्व नहीं है जिन्होंने भोगा है, ये उनका भी दायित्व है जिनको वो अनुभव साझा किया गया है। और ये विषय न मरा था, न मरा है, और न मरेगा। इस पर रचना संसार होता रहेगा, अलग अलग दृष्टि से होता रहेगा। आज के इस सभागार में जो युवा बैठे, मैं बहुत प्रसन्न हूं। कम से कम उन्होंने इस विषय पर सुनने का मन तो बनाया। अब वो अपने परिवार से सुन करके आए या यहां इस सभागार में सुन करके जाए, निश्चित रूप से कुछ तो तारे उनकी झंकृत होंगी। और जब तारें झंकृत होंगी तो वो देश की उस भूगोल के विभाजन पर जाएंगी कि ऐसा क्यों हुआ कि सिंध का पूरा हिस्सा उधर समाहित हो गया और सिंध को भारत में इस आ करके एक गांव तक न मिल पाया। क्यों ऐसा हुआ कि अजो जो साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग नॉवेल है, तो प्रोटोगोनिस्ट मोहन जब अपनी अस्मिता को लेकर के उस किसी एक यहाँ के स्थानीय से जब नौकरी मांगता है, तो उसको क्यों सुनना पड़ता है कि तुम भगोड़े हो, हमने तुम्हें आश्रय दिया। इस प्रकार की भावना से जब आप प्रदर्शित होते हैं तो पुनः रेखांकित करता हूं, अपने दर्द को बताना किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। अगर ये संदेश यहां जा रहा है तो इस संदेश को मत लीजिए। इसका भाव यहां पर है कि हम अपनी पीड़ा, अपना दर्द आप तक बयान कर पाते हैं। कहानियां लिखी गई, यस, बहुत सारी कहानियां जिसमें सिंध की सार है, सिंध की यादें हैं। एक पुस्तक लिखी गई है सरयू से सिंधु, जो एनबीटी के द्वारा प्रकाशित है, बहुत छोटी सी पुस्तक है, और वो है संस्मरण। आपको कहानियां मिलेंगे, उपन्यास मिलेंगे, और उस संस्मरण में क्या है, उसका शुरुआती पन्ना क्या कहता है, वो आपके सम्मुख रखता हूं। शुरुआती पन्ना है, अयोध्या का एक राम नवमी का मेला लगा हुआ है। एक पिता जो विभाजन की त्रासदी से माइग्रेट होकर के, प्रव्रजन करके अयोध्या आकर के सेटल होता है, और वो अपने बच्चे को लेकर के, 8 से 10 साल के बच्चे को लेकर के रामनवमी के समय वो जाता है सरयू में स्नान करने के लिए। उसके पिताजी सरयू नदी में उसको डुबकी लगवाते हैं, सीढ़ियों पर बैठा देते हैं, और वो स्वयं वहां पर चले जाते हैं और स्नान करते हैं। बच्चे को कुछ ज्ञान नहीं है दिशा का, 8 साल का बच्चा। वो अपने पिता को देखता है कि अरे, सभी लोग तो एक दिशा में लेकर के सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, एक अकेला व्यक्ति है जो उल्टा खड़ा हुआ है, और वो उसके पिता है। वो चिल्ला करके कहता है, डैडी, पापा, आप गलत कर रहे हो, उधर देखो।
वो स्नान करते हैं, उसको इशारा करते हैं कि बैठो बेटा, आता हूं मैं। वो आते हैं, अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं, कहते हैं आज मुझे रामनवमी के दिन मुझे अपनी सिंध देश, अपनी भूमि, जन्मभूमि याद आ गई। काश कुछ ऐसा हो कि देश का विभाजन समाप्त हो, सरयू नदी और सिंधु नदी का जल मिले और दोस्ती हो उठे, विभाजन समाप्त हो जाए। इस विभाजन के समापन की पीड़ा उस भुक्त भोगी ने इतने वर्षों के बाद भी अगर वो वहां पर उठाता है, ये यात्रा संस्मरण वहां से प्रारंभ होता है और पूरी सिंध की यात्रा करके आता है। आपको लगता है विषय मर रहा है ये? और जो प्रश्न उठाया गया वो अद्भुत उठाया गया, और ये प्रश्न मैं यहाँ के इस मंच से भी उठाना चाहता हूं। ये सामान्यतः कहा जाता है कि जितनी तपस्या, जितनी कष्ट पंजाब के लोगों ने भोगी, सच है, बहुत पीड़ा भोगी उन्होंने, उतनी सिंध के लोगों ने नहीं भोगी। सिंध के हिंदू मुस्लिम रिलेशंस पर बहुत अच्छी बातें लिखी गई। अगर ये लिखी गई तो इतिहास के पन्ने क्यों भरे पड़े हैं कि मुस्लिम लीग ने वहां रह करके स्थानीय लोगों को कश्मीर की तरह से कहा कि या तो परिवर्तित हो जाओ या कश्मीर छोड़ के चले जाओ, जो 92 में कहा गया। तो वहां के लोगों को क्यों उकसाया गया, चाहे वो पड़ोस का मुस्लिम हो या कहीं का? ये सिर्फ इतिहास के विषय है क्या? हम जब साहित्य सृजन करेंगे तो इतिहास के पन्नों से कोई आधार नहीं लेंगे क्या? अगर नहीं लेंगे तो आपके लेखन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं मैं। इतिहास के पन्नों से उस भूमि को आपको लेना ही पड़ेगा, और उससे जब आप लेंगे तो आप समाज को सही दिशा दे पाएंगे। तो इसलिए आज के संदर्भ में अति आवश्यक है, और ये सामान्यतः अनगिनत वहां पर कराची बम कांड होता है, हैदराबाद के उस जो किला है उसकी शाखा पर अटैक होता है, उसके पश्चात वहां पर 6 जनवरी की एक घटना आती है जिसको ठाकुर चावला ने कहानी के रूप में लिखा है और यहां पर वो उद्धृत की गई है। एक प्रश्न बहुत सहज भाव से उठाया जाता है कि सिंध की साहित्य की विभाजन पर आधारित जो विषय है वो बहुत सॉफ्ट है। तो ये एक रिसर्च का शोधार्थियों के लिए एक प्रश्न खड़ा करता हूं मैं, वो इस पर सोचें, ये एक दृष्टि से उत्पन्न करें कि ऐसा क्यों है। आज मैं इसका उत्तर नहीं देना चाह रहा हूं। मित्रों, एक आखिरी बात कह करके, ऐसे ऑटोबायोग्राफी बहुत सारी है। मेरे जीवन के सुनहरे रुपहले पन्ने पोपटी हीरा नंदानी की, उपन्यासों में अजो है, और उसके पास जलावतनी है मोहन कल्पना का, मुंहिंजी मिठड़ी सिंध मेरी मीठी सिंध कृष्ण खटवानी है, अपनी अपनी मरीचिका भगवान अटलानी की है, पखियड़ा वलर खा विछड़िया, पक्षी अपने झुंड से छूट गए गोविंद माली, बहुत बड़े 25 उपन्यासों के लेखक, उन्होंने ये लिखा है। उसके बाद संस्मरण आते हैं, सिंधु की यादें आती हैं, साक्षात्कार आते हैं, आप बीती आती है, क्रिएटिव राइटिंग आती है। लेकिन आप बीती, साक्षात्कार और क्रिएटिव राइटिंग के बीच में एक दूरी है, इसको समझने की जरूरत है। आखिर में एक सिर्फ 2 बिंदु आपके सम्मुख रखते हैं। इंद्र भोजवानी जी कहते हैं, हुआ स्वतंत्र देश, आए दिन बहार के, धरकर फकीरी वेश, सिंधी निकले सिंध से। और नारायण श्याम कहते हैं, सिंधी में पढ़ता हूं, सामान्य सिंधी है, अला ये न थिए जो किताबन में पढ़जे, कि हुई थी सिंध ऐ सिंध वारन जी बोली। हे ईश्वर, ऐसा न हो कहीं कि हमें किताबों में पढ़ना पड़े कि कोई सिंध थी और कोई सिंधी भाषा थी और कोई सिंधी लोग थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। आपका बहुत धन्यवाद। I now hand over the mic to the Honorable. Who was responsible for the partition? Anybody wants to answer that? I'm incapable of answering this question. No, I am not capable. I will tell you, this is not an answer to your question, but I think there are libraries full of books and analysis and documents who have written this thing.
I don't think we can come up with blaming one person or one set of people, or it was the way the entire historical situation evolved after the late 30s. It was heading towards something like that. And ultimately, when the British Empire could not hold on to India, that became the easiest way of running away. Now, could it be been avoided? You know, the most unhappy man in India on Partition Day was probably Mahatma Gandhi. No, no, you can speak or I can speak. आप डिबेट मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं. आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब देने की कोशिश करी. आप जरूर ये भी कई लोग कुछ कहेंगे, कई कुछ. जी चलिए चलिए छोड़ दीजिए. मेरी जो किताबें पढ़ने से जो थोड़ी सी नॉलेज थी मैंने आपको बता दी. वी हैव नो आइडिया how it could have been avoided. There is a massive debate, and this is not the forum for this debate. There's another hand there. Yes. Exactly. Again, absolutely, absolutely true. And I think आपने भी ये कहा, आपने भी इस पे इशारा किया. The point is, Sanjoy, as you know, this is literature. And literature has to be written by people who know their people, who know their landscape, who know their human experience. Now, it is very difficult. There are 5 writers sitting here. कि आप कहिए कि आप जाके खासी इसके बारे में लिखिए, उन्होंने क्या फील किया. मैं कुछ नहीं लिख सकता. So my point is, history is one thing, forget history. But I think ultimately it becomes, literature rises from within. And I think, जैसे इन्होंने सिंधी पे बात करी, there is so much being written or should be written, more should be written. I think some of it has to come from the communities. I'm sure it is being done. You carry on, you have to say. Yeah. Any more questions? Otherwise, I'll conclude by a few remarks. And आप कुछ कोई कहना चाहेगा? I just want to thank our 4 very eminent speakers for raising some very fundamental issues of partition literature. And again, these are questions which have been raised. It's very difficult to find solutions. Solutions will come if questions are raised. I just wanted to say 1 or 2 things. The issue of partition, who was responsible, who did what to whom, if this will depend on where you stand. And some of it is inevitable that there is a bias that comes into the writer's mind. But I think ultimately literature cannot be created in anger. Literature, अब Graham Greene ने लिखा था कि to write literature you have to put an icicle in your heart. You have to cool your passion and then write with detachment. Possible for some, not possible for others. The second thing is that a lot of the literature, particularly I know in Punjab, I'm not very familiar with others, but in Punjab, because both my parents wrote, I can make this a little personal now. Both my parents were honored by the Sahitya Akademi and both wrote on partition and are recognized.
and other people from their generation. The basic ideology of that writing is humanity. Above all, we may disagree with it, but the fact is this book was mentioned by Professor Parihar, so I'm raising it, Savage Harvest. This is a collection of my father's Partition short stories, which I translated. Now in this you will find good Muslims and bad Muslims. You will find good Sikhs and very bad Sikhs. And literature is a vehicle for showing us the mirror to our society. Terrible things were done in West Punjab to Hindus and Sikhs. Terrible things were done here in Delhi by Hindus and Sikhs. And I think the writer has had to have the courage to look at it in the face. Because the question is, are we writing to forget or are we writing to remember? I'm not sure of the answer. For instance, the Jews, they send every government servant, every diplomat in Israel has to visit Auschwitz in Poland, the concentration camp. Incidentally, I have made 14 visits to Auschwitz because I was posted in Poland. They are sent there so that they have this thing of never again. We will never allow this to happen to us again. Now, it's an open question today that it may not happen to them, but they may be doing it to others. But the fact is, how do you remember? You certainly should not forget. We cannot forget because it's in us, you know. How do you remember? Do you remember for revenge? Or do you remember that we should not ever be in a position that such a blunder is ever made again, at least in our country? So these are questions. And I know we don't have the time to answer them, but these are the questions which will continue to haunt writers. Writers are best when they are haunted. So I wish all of you a lot more thought, a lot more power to your pens, and to the audience for being with us. Thank you very much. Thank you very much. On behalf of Sahitya Akademi, I'd like to thank the Honorable Chair and our esteemed speakers for taking time out for us. And thank you all for being with us. अब भोजन का समय है, तो 2:30 बजे अगले सत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी.